Okay, so good morning, students. So in previous parts, we have seen this types of clouds. Okay, so you can refer the playlist and you can see all the parts. So this we are discussing about the class 12 computer network that is of 10 marks. Okay, so this we are discussing about the drum 2. Okay, so this whole chapter we will cover in different parts. So this you can enjoy. Basically, my motive is so that you can enjoy this videos. So that's why I've made it only for this 10 minutes. Okay, so now let's see, we have this next topic that we have IoT, that is Internet of Things. So IoT is a technology that connects things to the internet over wired or wireless connections. ठीक है, जहाँ पे भी इंटरनेट का यूज होगा, वायर हो या वायरलेस हो, that is called Internet of Things. Here the things refers to every smart device of the today's age, computers, smartphones, home application, wearable vehicles, etc. Okay, so basically, if this device is connected with the internet, this is called IoT, that is Internet of Things. So IoT allows people and things to be connected anytime, any place with anything and anyone using any path slash network. कोई भी path से अगर आप connection करना चाहते हैं with the help of internet, you can use. We will see an example, so don't worry about it. So this is the full form is important. IoT, that is Internet of Things. Basically, it is a phenomenon that connects the things, that smart devices, to the internet over wired or wireless connection. Okay, so enabling technologies for IoT. IoT is a phenomena that can connect variety of devices to internet. आप लोगों ने example हम देखते हैं. First example we have is RFID. सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है RFID सेंसर्स है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है for the software efficient network connectivity. So first is RFID, that is it stands for radio frequency identification. ठीक है, आजकल क्या हो गया, गाड़ियों में we can see in automobiles this lots of things are using the RFID tag. Okay, so this technology is designed to use radio waves. Radio wave का यूज होता है to read and capture information on the tag. मैं सिर्फ दूर से ही, मेरे पास एक रिसीवर होगा, मैं दूर से पता लगा लूंगा कि what is the information and what this automobile is all about. Okay, this is used by the organization for recognizing the same person that he or she is working in the organization or not. Okay, if the automobile is coming, that their vehicle is coming, we can use this for washing machine. You can see, so lots of devices, सब internet से हम connect कर सकते हैं. So RFID is a small microchip that attached to an antenna. It identifies and tracks the data of the things. कुछ नहीं, data बताता है कि what this is all about. Okay, and what this automobile is basically, it's used. It can use for a safety purpose. Okay, this RFID is used for that. This is a radio frequency. It uses the radio frequency, and this is radio frequency identification. After that, we have the sensors. So sensor is a device that is able to detect changes in an environment. Okay, so basically sensor, it is used to sense the, it can sense the temperature. We have lots of sensor. Temperature sense करने के लिए, pressure sense कर रहा है. Okay, आपको पता लगा के बता रहा है motion है क्या नहीं. If my pencil is moving and if any sensor can sense it, so these are different types of sensor that you have. Okay, so this is also with the help of IoT, that is Internet of Things. Okay, so now next is smart technologies. Smart technologies are the need of hour, turning off or on devices, stopping a vehicle, locking and unlocking a door. Okay, adjusting a temperature. These are all smart things. Okay, now for this software, it provides a reusable solution for connecting, taking action, and solving issues that may arise. So software, what the software is doing, basically it is our application that we are using. So these are all applications of IoT. Fifth is efficient network connectivity. So IoT is formed through interconnection of devices to the internet, hence the connectivity is important. अब devices that can form IoT, any device जिसके पास क्या होगा, that is an RFID tag can be put into a part of IoT, that is Internet of Things. आजकल home appliances में RFID होने लगा है, that is fridges, cookers, coffee makers, heaters, TV lights, etc. Wearables में clothes, shoe, hats and watches and heart monitor. Now next we have this Internet of Things, any device, anybody, anywhere. What is this Internet of Things? So now you can see we have this any device we can use, and we can use it for anybody. We can use this anywhere. We can use in any business. We can use in any network. Okay, so lots of networks. Any network if you want to use, you can use in this Internet of Things. Anytime you can use this. Now you can see the smart watches. These are all examples. Now you can see this laptop. Now you can see this speakers. These are all examples of Internet of Things. Okay, now next we have is this modulation technique. So modulation, basically if you want to increase the signal strength, you can increase the signal strength, and this strength, increasing the strength of a signal, is called modulation technique. Some techniques are used. Let's see one by one. So we are using this radio waves and microwave extra used for carrying data or messages. ठीक है, message और data को carry करने के लिए we are using this that radio wave and microwave. So however these waves carrying messages is the result of particular technique. कुछ technique use होती है, that is called modulation. So modulation is a process of changing the characteristics of these waves to be transmitted. So this is called the carrier wave by superimposing the message signal of high frequency signal. अब कैसे superimpose होती है, कैसे carrier wave है, जो एक wave जा रही है उसके अंदर हम data वाली wave को superimpose कराते हैं. So what is this all about? Let's see. So a carrier wave by itself does not carry much information. So carrier wave है, this is only this you can see. Okay, and this sine wave, a message signal. This you can see, this is a message signal that carries the data.
अब इसको एक वेव को दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे एंड नाउ आई एम बेसिकली गिविंग, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक, सो दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन. Okay, now the superimposition of this is basically one wave into another wave. This is called as modulation process. Okay, this is all about the modulation process that we have. Now major types of modulation, हमारे पास कई तरह के modulation होते हैं. We have this AM that is amplitude modulation and FM is frequency modulation. अब amplitude में आप देख सकते हो, amplitude में आपको amplitude बढ़ता हुआ दिख रहा है. You all have discussed in this साइंस में आपने 10th में पढ़ा होगा. What about the frequency? Okay, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. वी हैव फेज मॉड्यूलेशन आल्सो. अब बात आती है कोलिजन की, दैट वी विल, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन आल्सो. सो व्हाट इज दिस कोलिजन इन वायरलेस नेटवर्क? सो मेनी डिवाइस नोड्स आर कनेक्टेड विद वन वायरलेस नेटवर्क. बहुत सारी डिवाइस एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होती है. इफ मल्टीपल नोड्स ऑन द सेम नेटवर्क ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम, अब सारी डिवाइस एक साथ डेटा भेज रही हैं, सो इट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड कोलिजन. तो वहाँ पे एकदम सारे डिवाइस जाके क्या हो सकता है, टकरा सकती है and data loss भी हो सकता है. In a computer network, collision is a specific condition that occurs when two or more nodes on the network transmit data at the same time. अगर सारी नेटवर्क्स एक साथ डेटा भेजेंगी तो कोलिजन के चांसेस 100% बढ़ेंगे. ओके, इट इज समथिंग लाइक व्हेन टू और मोर पीपल आर क्वेलरिंग विद ईच अदर एंड स्पीकिंग एट द सेम टाइम. दो और तीन पर्सन अगर एक साथ बोल रहे हैं, दैट मींस दे आर क्वेलरिंग विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कोलिजन. बट नो वन इज लिसनिंग टू नो वन, कोई सुनना नहीं चाह रहा है. ओके, दिस इज द कंडीशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now next we have is this half duplex and full duplex communication. So the type of communication which is two-way communication. Two-way communication की अगर बात करें, फिर sending and receiving takes place, दोनों एक साथ हो रहा है. ठीक है, क्लाइंट भेज भी रहा है और साथ साथ सर्वर उसको भेज भी सकता है साथ साथ. ये देखो मैंने तीनों को एक साथ दिखाया. सिंप्लेक्स में सिर्फ एक साइड भेजते हैं. हाफ में क्या है, दैट वी विल सी नेक्स्ट डेफिनेशन. और फुल में देखो, अभी फुल की बात हम कर रहे हैं, देखो दोनों साइमल्टेनियसली, लाइक मोबाइल फोन में आप एक साइड से बोल भी सकते हो क्लाइंट, और आपका जो रिसीवर है जो अदर साइड पे हमारा दैट इज अ क्लाइंट, दूसरे साइड पे जो हमारा सर्वर है, और यू कैन से सेंडर है और रिसीवर है. मैं सेंड कर रहा हूँ डेटा को, मैं बोल रहा हूँ और मैं उधर से सुन भी सकता हूँ. साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ बोल सकते हैं. वीडियो कॉल यू आर ऑल यूजिंग दिस. ओके, सो मोबाइल फोन इज एग्जांपल ऑफ दिस हाफ डुप्लेक्स. नहीं, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है. हाफ का नहीं बच्चे, फुल डुप्लेक्स का. Now next is this half duplex. आपने वॉकी टॉकी देखा होगा. इट इज अ कम्युनिकेशन, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. एक बार में एक साइड से कम्युनिकेट हो सकता है. हाफ डुप्लेक्स में भी व्हाट वी आर यूजिंग दिस वॉकी टॉकी. वी आर यूजिंग दिस हेलो दिस इज द मैसेज. ओके, सो व्हाट वी आर यूजिंग बेसिकली, अब वो वेट करता है, फिर दूसरा, फिर द सेकंड वन इज गिविंग दैट यस आई एम रिसीविंग द मैसेज, हेलो आई एम रिसीविंग. दिस इज द एग्जांपल, दिस इज वॉकी टॉकी एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स. ओके, नाउ वी हैव दिस हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ये होता क्या, कैसे होता? Type of communication which is a one-way communication, either sending or receiving only one take place at same time is called half duplex. Half duplex हमने पढ़ लिया. ठीक है, एक simultaneously एक साथ होता है, जिसमें walkie talkie एग्जांपल. अब जो आपका half duplex है वो कौन सा यूज करता है प्रोटोकॉल? इट यूजेस अ प्रोटोकॉल CSMACA, that is carrier sense multiple access and collision avoidance. What is this? That we will see later on. आप इसकी अभी फुल फॉर्म याद रखो. Wired network uses collision detection such as CSMA-CD, that is carrier sense multiple access collision detection. तो जो आपका वायर्ड होता है उसमें कोलिजन डिटेक्ट होता है, एंड लेकिन वायरलेस में कोलिजन क्या होता है, अवॉइड होता है. ओके, हाउ CSMA/CA वर्क्स? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CSMA/CA इज डिस्क्राइब्ड एज नोड रेडी टू ट्रांसमिट/स्टॉप. नोड रेडी होनी चाहिए बात करने के लिए, नोड इज रेडी टू सेंड द डेटा. ठीक है, लिसन अदर नोड, दूसरों को सुनो, दूसरे आपको भेज रहे हैं. सो इफ अदर नोड्स आर सेंडिंग द डेटा, यू हैव टू लिसन कि अच्छा वो भेज रहे हैं तो बिल्कुल आप रुक जाओ वहाँ पे. इफ एनी ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस, वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज आर ए बिजी, इंक्रीज बैक ऑफ टाइम. अगर आपको लग रहा है सब भेज रहे हैं तो वहाँ पे वेट करो, स्लीप करो या वेकअप करो, दैट वी विल सी लेटर ऑन. सो यहाँ पे BEP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ. ओके, इफ द बेसिकली चैनल इज फ्री, so you send your data, you can send your message. Verify whether transmission took place correctly or not. Verify करो आपको जो ट्रांसमिशन है करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. रिक्वेस्ट टू सेंड स्लैश क्लियर टू सेंड, तो रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करवाओ सेंड करने के लिए, एंड क्लियर टू सेंड. ठीक है, दीज आर द टू एक्नॉलेजमेंट दैट यू कैन यूज. अब CSMA-CA विद एक्नॉलेजमेंट, आप एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, मैंने भेजा और मेरे को रिसीव होने के बाद sender and receiver sends me the acknowledgement, yes I have received this, sir I have received this. So this ACK signal is generated by the receiver node only if the data frame is received in valid form within a specific time frame. कुछ टाइम के दौरान, कुछ टाइम की लिमिट के बीच में अगर मुझे कुछ मिलता है, that means there is a acknowledgement method. If the sender node does not receive ACK in a specified time, it considered it as a failed transmission and retransmit the data. Now CSMA-CA with RTS CTS, that is ready to send / clear to send. In this method, the sender node first sends and ready to send.
वो सेंडर जो नोड होगी वो रेडी टू सेंड सिग्नल भेज देगी टू इट्स रिसीवर. रिसीवर कंफर्म द रेडीनेस. रिसीवर कंफर्म करेगी टू रिसीव बाय सेंडिंग सीटीएस सिग्नल टू सेंडर एज वेल एज ऑल द अदर नोड्स. अदर नोड्स अपॉन रिसीविंग अ सीटीएस, भाई क्लियर टू सेंड है. अब क्लियर टू सेंड है, सब रिसीव सारी नोड्स को मिल जाएगा. विल नॉट ट्रांसफर, वो वहीं रुक जाएगी और जिसको भेजना होगा वो भेज देगा. ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर डेटा भेजना है तो मैं एक सिग्नल भेजूंगा सारी नोड्स को क्लियर टू सेंड. ओके, द सेंडर नोड अपॉन रिसीविंग अ क्लियर टू सेंड गोज अहेड विद द ट्रांसमिशन, तो वो ट्रांसमिशन जब कर देगी. ओके, this is not very important for you, but basically you need to understand what is this. The full forms are very important: CSMA CD, collision detection, and this collision avoidance. Okay, now this we will take in the next class, next part. Okay, so that's all for today, students. So you can see this playlist. Okay, so you can basically enjoy, because what is the pattern of teaching is there that I'm using only 8 to 12 minutes. I'm taking each part you can enjoy as well as you can learn for a 10 marks in your class 12th. Okay, and computer science, this is term 2 computer network. So that's all for today, and next we will see in the next part. Thank you so much.